यहाँ पर रेल मंत्री ने जो बयान दिया है हादसे को लेकर, ये कहा है कि दरअसल हुआ इंटरलॉकिंग फेलियर, जिम्मेदारी तय कर ली गई है, दोषी को पहचान भी लिया गया है और अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर स्टूडियो में इस पूरे मैप को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस फेलियर है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में तस्वीर कुछ और थी लेकिन ट्रैक पर तस्वीर कुछ और थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल होगा और ड्राइवर की लाइन थ्रू होगी, इसीलिए वो पूरी स्पीड में जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड स्पीड रही होगी उस सेक्शन की, उससे वो गुजर रहा होगा। चाहे वो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम हो या मैनुअल सेक्शन हो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। रही बात, जैसे कि अशोक जी ने भी पहले बताया कि ये सिर्फ इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम होती, तो इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम अगर सिस्टम आपका इतना कमज़ोर है जिसमें बहुत जल्दी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बदल देना चाहिए। फिर आप वो टोकन सिस्टम पे आ जाइए, पुराना वाला जो सिस्टम है, कम से कम वो सेफ्टी तो इंश्योर कर रहा था आपकी। अगर आप इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर की सेफ्टी इंश्योर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस का फेलियर भी है, वो कोई पॉइंट की कोई समस्या रही होगी, इसी की वजह से ट्रेन डिरेल हुई होगी, डिरेल होने के बाद में वो लूप लाइन पे खड़ी हुई ट्रेन से टकराई होगी। ये आप यहाँ पर एक चीज और भी गौर करिए, अगर लूप लाइन पे पैसेंजर ट्रेन रही होती तो ये हादसा और कितना बड़ा हो सकता था। वो एक मालगाड़ी थी, एक गुड्स ट्रेन थी, सिर्फ यही जो ट्रेन डिरेल होती और यहीं तक मामला रोका जा सकता था अगर सही समय पर सही एक्शन लिया जाता। The railway accident that occurred at the Bahanagar station in the Balasore district of Odisha is being simulated in this instance. At this station, there are two mainline tracks. The down main is the other, and the up main is the other. On these two mainline tracks, two trains can travel in various directions. The two mainline tracks also have loop tracks on either side of them. When a train needs to be temporarily stopped, loop tracks are employed. For instance, there are two trains moving in the same direction. Let's assume one train is slower though. The train will then be instructed to stop for a while at the loop track, in order for the fast train to pass through the main line. On the major upline of this station was the 12841 Shalimar-Chennai Central Coromandel Express. In Bengal, this train is also known as the Hospital Express, because this train transports Bengalis from the lower middle class to Vellore and Tamil Nadu for medical care. This train is frequently crowded as a result. A slow train was requested to come to a stop at the loop track so that the Coromandel Express could travel via the main line promptly. Iron ore was aboard this train, the 12864 Yasvanpur Express, which was traveling in the direction of Howrah of Bengal. On the primary downline, numerous patients and their relatives were also aboard this train. They desired to receive medical attention at the hospital in Whitefield and Parthi. It was not intended for these two trains to stop at this station. The assistant station manager made the choice to request that two goods trains halt at the loop line in order to prevent the express trains from stopping at the station. A train needs two things to function properly: its track and its speed. And each of these objects has its own operating system. The locomotive pilot, also known as the train driver, is in charge of setting the pace. Multiple signals are visible to the pilot. The train has a signal, similar to how cars have a traffic light. The locomotive pilot will use this information to determine the train's proper speed. An interlocking system, which may be manual or electronic, determines the train's route. The system in the disaster in Odisha was electronic. The train pilot receives a signal from this system in essence.
The train can pass via the main line if the light is green. The train must pass through the loop line if the signal is yellow. The pilot's signal and the track that the train is traveling on are connected by the system. The signal will be green if the computer decides the train should cross the main line. The light will be yellow if the computer determines the train should pass over the loop line. The locomotive pilot will slow down the train if the signal is yellow so that it can stop at the loop line. A green signal was given to the locomotive driver, indicating that the train could pass across the main line. But eventually the signal disappeared. The track was turned to the loop line in spite of the green light. The locomotive pilot verified this. Preliminary finding से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। The locomotive pilot claimed that the train proceeded forward when he saw a green signal for the main line. The Coromandel Express driver was operating the train at maximum speed of 128 km per hour because the signal was green. The Isvanpur Express, which was on the main downline at this point, overtook the Coromandel Express, which was on the main upline. The Coromandel Express entered the loop line at a high speed since the switch was in the direction of the loop line. The track switches are not intended for use at high speeds. Your speed should be incredibly low as you approach the loop line. However, due to the Coromandel Express's rapid pace, the goods train was struck by the derailed train. Iron ore was in the goods train. आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं. This was the cause of the severe frontal impact, which resulted in numerous fatalities. The Coromandel Express derailed because of its rapid speed, in case you forgot. And further 20 minutes later, 13 coaches of the Coromandel Express and the final 3 coaches of the Isvanpur Express crashed, resulting in more fatalities. A train driver cannot regulate the position of the track, according to Sudhanshu Mani, who worked on the construction of the Indian Vande Bharat trains. Where the train goes is determined by the track. According to many railway experts, India uses this electronic technology millions of times per day. मैं सिग्नल व्यवस्था के बारे में इतना बताना चाहूँगी। साधारण भाषा में जिस तरह की हमारी सिग्नलिंग की व्यवस्था होती है वो फेल सेफ होती है और उसका जो लॉजिक है वो इलेक्ट्रॉनिकली बना रहता है। जितने भी हमारे इंटरलॉक स्टेशन इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक स्टेशंस हैं वहाँ पर, जिससे कि उस लॉजिक के तहत कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट सिग्नलों द्वारा परमिट नहीं किया जाता है जिससे कि कोई हादसा हो सके। तो इस तरह की सिग्नलिंग प्रणाली रूल्स और बहुत ही कड़े नियमों का पालन करके बनाई जाती है और अब टेक्निक को इस्तेमाल करके, कंप्यूटराइजेशन को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करके एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम इंटरलॉकिंग का बनाया जाता है, जिससे कि स्टेशंस पर और रास्ते में ट्रेन्स जो हैं वो अपने अपने रूट पे सेफली चलते रहे और कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट नहीं हो जिससे कि कोई हादसा हो। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस machine में failure. One thing to keep in mind is that both express trains were brand new train types. The LHB coaches were new. German coaches that are safer are LHBs. ICFs are dated coaches without modern safety features. In this accident, this technology helped save many lives. All of the coaches would have collided if it weren't for this technology. There may have been serious repercussions. ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। अचानक ऐसा हो गया, वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था।